impressed that they actually said, "We just saw Shri Ram's army." ताकि ये जब जाकर बताते कि हम लोग ने श्री राम जी की जो सेना वो देखी। And Ramayan gets very angry. Shri, how can you call him Shri Ram? रावण एकदम अत्यंत घबरा जाता है कि मेरे सिपाही लोग श्री क्यों बोलते? I am Shri Raman. रावण के आगे श्री नहीं लगाएंगे, लेकिन राम जी के आगे श्री बोल रहे। Lankapati, Sitapati, what else? Mayapati, Pati Rama. महाराज कह रहे, रावण कहते हैं मायापति, सीतापति, सबके पति। So, but then all the monkeys and Ram, they're on the other shore of the ocean, and Lanka is 800 miles away. That's 80 yojanas. सभी सेना भगवान जी के साथ इस तट पर है और 800 माइल उतनी दूर है जहाँ ये लोग को जाना है। And Ram is getting very worried. How am I going to cross the ocean with all these people? भगवान श्री राम चिंतित हो गए कि कैसे मैं सब संपूर्ण सेना को लेकर उस पार जाऊं। So Vibhishan, being very dharmic, tells him the right thing to do is you fast and pray for 3 days to Varuna, the ocean god. तो क्या हुआ? भविष्य जो है बहुत धार्मिक है, बहुत सुंदर निर्णय देता है कि 3 दिवस तक हम सब उपवास करेंगे और जो समुद्र देवता वरुण देवता को मनाएंगे, रिझाएंगे। But after 3 days, nothing happens, and Ram gets really angry, and he pulls his bow out, and he says, "I'm gonna kill the ocean." और क्या हुआ? 3 रोज उपवास के बाद में कुछ नहीं हुआ। भगवान राम जी क्रोधित हो जाते, अपने बाण धनुष निकालते कि मैं समुद्र देवता को विनाश कर दूंगा। So he pulls the arrow back, and then the Varuna comes out and says, "Please accept my humble obeisances." भगवान श्री राम जैसे बाण निकाले धनुष पर चढ़ाए तो वरुण देवता आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे। You can't dry the ocean; that would disturb the balance of all the elements. अगर तुम समुद्र को सुखा दोगे तो ये धरती का संतुलन नहीं रह जाएगा। But I suggest that you build a bridge across with stones, and if the monkeys write your name, Shri Ram, on the stones will float. वरुण देवता कहने लगा, क्यों ना ऐसे करो कि आप सागर के ऊपर आप सेतु बना दो और उसमें राम लिख दो। And he reveals that Neel is actually the son of Vishwakarma, the architect of the demigods. और जो नील वानर है वो विश्वकर्मा का ही संतान है। So then the monkeys go and they get all these stones, and Hanuman, thinking he wants to get the biggest stone possible, picks up Govardhan. तो क्या हुआ? सभी सेना लोग शिला लेकर आने लगे, तो हनुमान जी ने सोचा ये सब छोटा ला है, मैं भयंकर, और वो गिरिराज गोवर्धन को उठा लेता। So Govardhan is not yet in Vrindavan. So गोवर्धन जो है अभी वृंदावन में नहीं है। So Hanuman is bringing him, and then when he's right over Vrindavan, he hears the voice of Sri Ram saying, "We already have enough stones, put Govardhan there." और हनुमान जी जब बताया कि गोवर्धन को ला रहे थे, जैसे वृंदावन के ऊपर से जा रहे थे तो आवाज आया आकाशवाणी के द्वारा कि सेतु बंद गया है, सभी लोग अपने सिरों में धर। And then Govardhan gets very, very saying, "I wanted to serve Sri Ram." और गिरिराज जो गोवर्धन है उत्तम क्रोधित हो गया, वो कहने लगा कि हम भगवान को सेवा करना चाहते हैं। And then he hears a voice from Sri Ram, "Don't worry, you'll get a chance to serve me later on when I appear as Krishna in Vrindavan." और क्या हुआ? फिर से एक और वाणी आता है भगवान क्या कि आप चिंता ना करो, द्वापर में जब मैं कृष्ण बन आऊंगा मैं तुझे सेवा का ये मौका दूंगा। So then Hanuman goes back, and then he sees them working just with little stones at this point on the bridge. तो हनुमान जी वापस आता है तो सब सेतु बनाने लगते हैं। And what happens is that he sees someone is interfering with their work, and he looks very closely, and he sees it's a spider that's trying to kick some dust to build a bridge. और हनुमान जी जब आता है, थोड़े कुछ सेतु बने थे, तो हनुमान जी के कार में एक छोटा सा बकरा जो है वो अपने पंखा से वो मिट्टी को लगा रही है। And so he says,
Get out of my way, you stupid spider. और मकड़ी से हनुमान जी का हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, क्या कर रहे हो? I'm serving Ram. You're just interfering with my service. और हनुमान जी कहने लगे, मैं राम जी को सेवा कर रहा हूँ, तू यहाँ क्या कर रहा है? And so Ram comes and says, Hanuman, he's doing as much service as you. You're a big monkey, so you think you're doing more. भगवान श्री राम समादृष्ट है, तो कहने लगा कि हनुमान वो वही रकम सेवा कर रहा है जैसे आप कर रहे हो. So finally, the bridge is actually, in the Valmiki Ramayana describes it's 800 miles long and 80 miles wide. It's a big bridge. बताया गया 800 माइल उतना उसकी लंबाई है और चौड़ा कितना बताया गया 80 किलोमीटर 80 miles. 80 miles is about 110 kilometers. लगभग 110 किलोमीटर उसका जो चौड़ापन है उतना. So Ravan is really upset at this particular time. So he climbs up on the top of mountain, the highest mountain in Trikut, and he asks his, actually Sardula, who are the soldiers on the opposite side? तो क्या हुआ, हनुमान जी भयभीत होने के तत्पश्चात अपनी पर्वत की शिखा पे चढ़ता है और वहाँ पूछताछ करने लगता है कि उधर कौन कौन है. And then he begins to explain who the different soldiers were, and Ravan starts to get really nervous about the whole thing. और वहाँ जब पूछताछ में उसके पता लगता है कि उधर कौन कौन कितने सैनिक हैं, तो रावण बहुत भयभीत हो जाता है. In the meantime, we have Ram and Sugriva and Hanuman. They also climb up on a mountain just to see what's happening. और इधर क्या होता है, भगवान श्री राम, सुग्रीव, हनुमान जी ये भी पर्वत पर चढ़कर ये भी देख रहे हैं इधर की सैनिक. And they look and they see this tower and they see Ravan at the top of the tower. और क्या है, एक भयंकर जो टावर है उसमें देखता है तो देखता रावण उस पे चढ़ के बैठा है. And so then Sugriva loses his temper and he flies over to where Ravana is and he fights him. He starts punching him and everything like that. और सुग्रीव बताया गया है सह नहीं पाता है, तुरंत वहां से छलांग लगाता है और हनुमान के साथ युद्ध करने लगता है, रावण के साथ युद्ध करने लगता है. And then Ravan actually starts to defeat him and Sugriva flies back. और उधर वहां पर रावण जो है वो बलिष्ठ हो जाता है तो सुग्रीव को वापस उड़कर आना पड़ा. But then Ravan has a different plan. He thinks, actually, I'm going to convince Sita Devi that Ram is dead. तो रावण ने एक दूसरा योजना बनाया कि मैं सीता को जाकर बताऊंगा कि राम जी मर गया है. And he goes to his magician named Vidujiva and he says, create a head of Lord Ram. तो जाता है अपने एक सैनिक के पास विदुर जी जिसका नाम है, वो राम जी का मूर्ति बनाने का सर. So then he brings this head on a platter to Sita Devi and he says to Sita Devi, all the monkeys in Ram were killed in his sleep. और वही सर को एक थाली में धर कर लाकर सीता मैया के आगे प्रस्तुत करता है कि भगवान श्री राम और जितना सैनिक मर गए. So now you have to accept me, Sita Devi. और हे सीता, अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं, मुझे स्वीकार करना पड़ेगा. So Sita Devi becomes completely overwhelmed, but in the meantime, Ravana is called back because there's some emergency. लेकिन सीता मैया भयभीत हो जाती है, लेकिन इधर क्या होता है, रावण को तुरंत बुलाया गया क्योंकि इधर बहुत नुकसान हो रहा है. And then at the same time, that head disappears of Ram. और तुरंत क्या होता है, भगवान श्री राम का जो सर है वो अंतर ध्यान हो जाता है. And so Sita Devi is wondering what's happening. But there's a good Rakshasi, another good Rakshasi called Sarama, who tells Sita it was just a trick. तो वहाँ पर एक और एक राक्षसी सलमान थी, वो कहने लगी कि ये एक माया की सर है. And then Sita, she's so intelligent, she asks Sarama to be her spy and to tell her what Ravana is planning. तो सीता मैया और बुद्धिमानी की कार्य करने लगती है, शर्मा से कहने लगती है कि तुम देखो गुप्त रूप से कि हनुमान रावण क्या कर रहा है. So in other words, Sarama is Sita's spy.
तो भले राक्षसी ने सर मार, लेकिन सीता मैया को सहयोग So she किया। becomes invisible and she goes where Ravana is planning all of his war games. और अंतर ध्यान रूप से वो रावण के पीछे पीछे जाकर सब देखकर सीता मैया को बताने लगती है। And she reports that Ravana has been advised, give back Sita, avoid the war. But Ravana is completely determined to keep Sita. और सब तौर से रावण के सुझाव मिल रहे हैं कि सीता मैया को लौटा दो, लेकिन रावण नहीं लौटाना चाहता। So then Ravana stations Hasta at the eastern gate, Mahaparsha in the south, Indrajit in the west, see if you remember all this, and Shuka and Sharna in the north gate. तो क्या हुआ, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, एक मेघनाथ जी को एक तरफ धरा, शुक्र को एक तरफ धरा, और अलग अलग चारों दिशाएं में अपना प्रमुख व्यक्ति को धर दिया। You don't remember all of them, that was a trick. And Vibhishan's spies also report back to Ram, and Ram plans to go to the northern gate to directly fight with Ravana. और भगवान श्री राम जो नॉर्थ के बल है, पूर्व के बल जाते हैं ताकि वहां से अपना युद्ध कर सके। And so Ram instructs all of his people that only 7 people should take human forms so they can tell the difference between the Rakshasas and the monkeys. तो भगवान श्री राम ने 7 लोगों को ये वरदान भी देते ताकि वो मनुष्य का रूप ले लें, ताकि वो फर्क जान सके। Because the monkeys also had the ability to assume any form they wanted. बानर के पास भी वो समर्थ है, कोई भी रूप ले सकते। And then Ram thinks, but basically it would be better if we could make some peace deal. So who would be a good emissary to send? फिर भी ये सब होने के पश्चात भगवान श्री राम सोच रहे अभी भी शांति का क्यों न योजना बनाए, और कौन यहाँ से जाएगा शांति दूत बनकर। So he says, Angada, you would actually be good. So Angada flies in to see Ravan and try to make peace. तो अंगद जी को, बाली के जो पुत्र है, उसको भेजा जाता है शांति दूत बनकर, भगवान श्री राम का शांति दूत बनकर जाता है। And the first thing he tells Ravan is that Ravan, you're going to be purified by Ram's arrows. और पहले चीज जाकर रावण जी से कहता अंगद कि हे रावण, तो भगवान श्री राम के बाण से शुद्ध हो जाओगे। So Ravan is furious, and he tells his 4 soldiers to actually capture Angada, but Angada gets away. He rises in the air and kicks Ravana's. The story about the foot is not in the Valmiki Ramayan. तो बोलने का प्रयास 4 सिपाहियों को कहता है कि अंगद को पकड़ लो, अंगद उड़कर चारों की सत्यानाश कर देता है। Now the reason I didn't tell the story about Angada putting down his foot, it's not in the Valmiki Ramayan. तो गुरु महाराज कहते हैं कि अंगद जी जो अपने पैर धरे थे कि कहा कि कोई अगर इसको हिला दे तो मैं अपने यहाँ से लौट जाऊंगा। I know all the stories from all the Ramayans, but I'm only telling the stories from the Valmiki Ramayan. गुरु महाराज ये भी जानता है कि वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है कि कोई आकर उसके पैर हटा सके, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं रहा। So that night the fighting starts, and the soldiers can't distinguish friend from foe. That means friend from enemy. And they were actually rivers of blood flowing. और फिर युद्ध का शुरुआत होता है और लहू की धारा बहने लगता है। So then even Indrajit enters into the fight and binds Ram with the snake weapon. और इंद्रजीत जब आता है तो अपने सर्प बाण से भगवान श्री राम को बांध लेता है। Ravan is completely ecstatic. Now I've defeated Ram and Lakshman, and so he puts Sita on the Pushpaka Vimana and allows her to see Ram just lying there. और क्या हुआ, जब सर्प बाण में बांध लिया, रावण इतने प्रसन्न हो गए कि सीता को पुष्प विमान में चढ़ाकर दिखाने लगा कि देखो तुम्हारा पति का कौन हालत। Finally, they bring Garud, and he eats the snakes and gets rid of the snakes. तो आप सभी लोग जानते हैं गरुड़ का जो मोह हुआ था वो आते हैं और राम जी का नाग फांस से निकालते हैं। And Garud explains that these snakes are his eternal enemies because they're the sons of Kadru. आप सभी लोग जानते हैं गरुड़ और सर्पों में हमेशा दुश्मनी शत्रु भाव रहते हैं। Actually, let me talk a little bit about Garud, some story you haven't heard. गरुड़ जी का थोड़ा सा कथा गुरु महाराज बता रहे हैं। So, Kashyapa had many wives.
केशव के पास बहुत से पत्नी थी And two of his wives was Kadru and Vinata. और दो में से एक विनिता और खद्रू नाम की थी। So they were given the choice that they could have 2 good sons or 1,000 bad sons. तो दोनों को ये सुझाव दिया गया था कि 2 लायक पुत्र आप चाहते हो या तो 1000 खलनायक चाहते हो। So Vinata said, I want 2 good sons. तो विनिता जो है उसने बोला मुझे 2 लायक पुत्र चाहिए। And Kadru said, I want 1,000 bad sons. खद्रू बोला मैं 1000 खलनायक दे दो। So basically, somehow or other, even though they had a human form, they laid eggs. तो किसी प्रकार से अंडा को देना पड़ेगा तब संतान आएंगे। So Kadru's 1,000 eggs hatched into 1,000 snakes. और खद्रू के जो अंडे हुए थे उसमें से 1000 सर्प निकले। And Vinata, she had 2 eggs, and she waited like 500 years, and they weren't hatching. लेकिन विनीता के पास 2 अंडे दिए गए थे और 2 अंडे 500 उम्र हो गए लेकिन वो अभी उसमें से बच्चा नहीं निकल रहे। And then so she broke into one and cracked one of the eggs. और वो क्या किया हिला हिला कर और क्या हुआ वो फूट गया। And this half bird came out, and he cursed his mother. He said, because you have broken into this egg and have not allowed me to fully develop, I curse you to become the servant of Kadru. और क्या हुआ क्योंकि फूटा उसमें से जो बच्चा निकला आधा चिड़िया निकली पूरा वो रूप ले नहीं पा रही थी और श्राप दी अपने माँ को कि तुमने मुझे पूरा रूप नहीं लेने दिया तुम्हें कद्रू की दासी बनना पड़ी। And so that bird later on became Aruna. Remember we mentioned him the other day. और वही चिड़िया अरुणा बनती Which is the charioteer of the sun god. और सभी लोग जानते हैं सूर्य के जो सारथी है उसका नाम है अरुणा। Okay, so then she waited and waited and waited another like 500,000 years or something, and then the other egg opened up. और उसके तत्पश्चात में एक और जो अंडा था वो खुलता And that was Guru. और वही है गरुड़। And Guru sometimes was so hungry he couldn't find enough food. और गरुड़ को कभी-कभी भोजन नहीं मिलता। So he had to, one time he ate a gigantic turtle and a gigantic elephant. And he was eating them. और भयंकर केचुआ और एक भयंकर हाथी सब भक्षण कर लिया। So what happened with the snakes in Garud is that once upon a time, Kadru and Vinata, the mother of Garud and the snakes, had gambled a little bit. और एक बार क्या हुआ ये दोनों बताया गया विनीता और कद्रू में एक विशेष बात हुई शतरंज की। And so the gamble was, what is the color of the Uchayasrava horse's tail? और दोनों में बात हुई थी कि जो उच्च शर्वा नाम की घोड़ा है उसका रंग क्या है। And so Kadru said the color is black, and Vinata said white. कद्रू जो है सर्पों की अम्मा उसने कहने लगी वो काला है और इधर विनीता कहने लगी कि वो सफेद है। And so they flew to see what was the actual color, but Kadru asked her snake sons to actually get into the tail to turn it black. तो कद्रू ने क्या किया अपने संतानों के सहयोग से क्योंकि सर्प है कि जाकर उसका रंग बदल दो और क्या हुआ उसका रंग बदली हो गया घोड़ा। So Kadru won the bet. तो उसमें कद्रू जीत गई। And Vinata, remember the mother of Aruna who got cursed? She had to serve her sister. तो क्या हुआ बताया गया है कद्रू जीत गई विनीता हार गई तो विनीता जो गरुड़ की अम्मा वो उनकी दासी बन गई। And that meant Garuda had to serve all these snakes too. और उसी तरह से गरुड़ जो है जितना बताया गया सर्प है सबको सेवा करना पड़ेगा। And so Garuda had to fly around with snakes on his back. गरुड़ को क्योंकि उसकी माई हार गई तो सब बताया गया सर्पों को अपने कंधा पे लेकर घूमना पड़ता था। So one time he tried to burn them all. और एक बार उसको इतना क्रोधित हुआ कि सब सर्पों के जला के रखा। By getting close to the sun. और कैसे जलाओगे वो लेके उड़ा एकदम सूरज के पास। But Kadru prayed for Indra to cause rain to come down, so they were saved. कद्रू ने क्या किया इंद्र देवता से प्रार्थना किया और इंद्र ने वर्षा कर दिया। So Garuda was so upset that he had to serve his snake brothers, half brothers,
then he asked them, how can I be freed from serving you? और क्या हुआ, गरुड़ जी जो है उसको देखा नहीं जाता, उसकी माँ कैसे दासी है, वो निकलना चाहता था, तो उसने पूछा कि मैं क्या करूं कि ये दासपन से मैं निकल सकूं. And they said, get us the Amrit from the heavenly planets. तो गरुड़ ने कहा कि जाकर अमृत लाओ जो स्वर्ग में. So Guru flew to the heavenly planets where they were keeping the Amrit, and somehow or other grabbed this Amrit, this nectar of immortality. अब सभी जानते हैं अमृत इतना सरल से नहीं मिलता है, लेकिन वो गरुड़ जाकर उस अमृत देवताओं से लड़कर छीन कर लाया. And Indra tried to stop him, but Guru just dropped one little feather that was as big as a whole universe, basically. और क्या हुआ, उस समय गरुड़ जब लाने इंद्र प्रयास किया था बचाने के लिए, लेकिन एक बूंद जो सागर के समान है वो दिया गया. And Indra said, okay, let's make a deal. I'll tell you how to give the nectar to your snake brothers, but at least they won't drink it. तो दोनों में, इंद्र जी और गरुड़ में अब राय सलाह दोनों कर रहे हैं, लड़ाई ना हो कि कैसे. इंद्र जी कह रहे तुम ले जाओ अमृत, लेकिन एक तुम्हारा भाई लोग नहीं पी पाए. He said, give it to them, but say you have to take a bath first before it. You take it and then steal it back. और इधर से दास अपने अम्मा को निकालना चाहता है, तो वहां से अमृत तो लाता है, लेकिन कहता है कि ये अमृत पीने के लिए तुम्हें नहाना पड़ेगा, और जब नहाने जाएंगे तो फिर उठा के लेकर. All right, and Guru does his mission, and on the way he meets Lord Vishnu. और गरुड़ जी जब आ रहे थे तो बीच में भगवान विष्णु मिलते हैं. And so Lord Vishnu is very pleased with him. He says, ask for benediction. और विष्णु भगवान गरुड़ पर प्रसन्न होकर कहने लगा कि आप मुझसे कुछ वरदान मांग लो. And Guru said, yes, I always want to be on your flag and fly higher than you. और गरुड़ कहने लगा कि मैं हमेशा आपसे भी ऊपर उड़ना चाहता हूँ, आपके जो छत फ्लैग है उस पर मैं रहना चाहता हूँ. And Lord Vishnu says, all right, I need a benediction too. तो उसने कहा मैं तेरे झंडी में रहना चाहता हूँ. तो भगवान विष्णु कहा ठीक है तुम ऐसे कर सकते हो, लेकिन मुझे भी कुछ कृपा चाहिए. And that benediction is you should always be my carrier. और भगवान कहने लगा कि वो ये है कि मुझे वरदान दो कि तुम हमेशा मेरा एक सवारी बनकर रहेगी. So Guru flies back and he gives the nectar to the snakes, and then right after that what happens is he steals the nectar while they go take a bath. और बताया कि गरुड़ जी पूरा अमृत लाता है, ये सब जैसे स्नान करने जाते फिर से उठाकर चोरी कर वापस चले जाते. And then he gets the benediction from Indra that his food will be snakes. और इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुआ, और इतने प्रसन्न होकर अमृत अगर नाक पी लेते कौन हालत होता, तो इंद्र ने कहा कि हम तुम्हारा भोजन है साथ. Actually, Garuda is allowed to eat everything but Brahmins. गरुड़ सब कुछ खा सकता है कि ब्राह्मण नहीं. That's why it's good to be a Brahmin. तभी जब ब्राह्मण दीक्षा नहीं लिया जल्दी ले लेना. He said, take quickly, Brahmin Diksha. Anyone who doesn't have a Brahmin thread, Guru Prasad. ब्राह्मण रहेगा आपके जनोई रहेगा, गरुड़ कभी छुएगा नहीं आपके. Because there's one story. One time Guru went to a village of low-class people, Nishadas, and began to eat everybody in the village. He was a cannibal too. एक बार गरुड़ महाराज जी एक गांव गया और बहुत ही नीचा स्तर के गांव था, गरुड़ सब के खाने लगा. But then he felt choking in the back of his throat. लेकिन वो जो खाया था कुछ गड़बड़ी हुआ जिसके उसके यहाँ पर अटकने लगे ना. It seemed that one of the Brahmins fell in love with one of the Nishida girls. क्या हुआ कि वही समाज में एक ब्राह्मण एक लड़की के साथ प्रेम कर लिया, वहीं रहा, तो उसके लिए लिस्ट. And Guru was going, and he said, get out, take your wife with you. क्या हुआ, और ब्राह्मण तो यहीं अटक गया, तो गरुड़ कहे निकलो निकलो, तो ब्राह्मण बोले और औरत भी तो के संग ले निकलो. So Guru, be careful around here. Okay, so let's get back to the Ramayan story. This story is also in the Mahabharata and in the Ramayan too. So.
गुरु महाराज ने एक कथा दी है, महाभारत में मिलेंगे और रामायण में कुछ भाग। So then a number of Rakshasas get killed, Dhumraksha by Hanuman, and then Rajatamsa by Angada. Just when you mentioned. गुरु महाराज कहते हैं कि कई राक्षस योद्धे लोग हैं, ये सब का वध होते हैं। So there's a continual fight. I'm not going to mention all the Rakshasas that got killed, and then Ravana comes out, and then Hanuman, first thing he sees Ravana, he punches him in the mouth. और क्या हुआ, एक के बाद एक योद्धा लोग मरते गए, और जैसे रावण आया, हनुमान जी ने देखा और छलांग लगाकर उसके अपने एक मुस्तिक उसके मुख पे मारता। And then Ravan counterpunches Hanuman. Hanuman is knocked unconscious at this time. और क्या हुआ, अपने बचाव में रावण भी उसको वही मुक्का मारता है और हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं। So Neil begins to fight with Ravana, and Neil makes himself very, very small. और नील जो है वो भी लड़ने लगा और अपने आप को इतना छोटा कर लिया लड़ने के लिए। And he actually goes on top of the flag of Ravana and starts making fun of Ravana and jumps on his crown, his bow, and everyone's laughing at Ravana. He makes him really angry. और नील क्या किया, रावण जी के जो झंडी है उस पर चढ़ जाता है, कभी उसके मुकुट पे बैठ जाता है, इतना छोटा बनकर उसके तमाशा करने लगता है। And finally, after all this fight, Lakshman comes in, and Ravan hurls his javelin at Lakshman's chest. और जब लक्ष्मण जी आता है तो रावण जी ने अपने अस्त्रों से वार करता उसकी छाती पर। And Ravan thinks, now I have killed Lakshman, and he tries to pick him up. और क्या हुआ, जैसे मूर्छित गिरता है तो उसने सोचा कि लक्ष्मण मर गया, उसको उठाना चाहता है, भूल जाता है कौन है। And so Hanuman actually picks up Lakshman and brings him back to a safe condition. रावण उठाने के बहुत प्रयास किया, लेकिन लक्ष्मण की कैसे उठाओगे, शेषा होता, हनुमान जी आकर उठा लेंगे। Yeah, that's your purport. Yeah, he's the Shesha avatars who holds up all the planets, so nobody can pick him up. गुरु महाराज कह रहे हैं वो शेषा अवतार है, पूरे ब्राह्मण को सर पे धरा है, रावण कैसे उठा पाएगा। So Ravan gets very, very angry, and actually Ravan gets defeated by Ram in this particular day. और रावण जो है उसका पराजय हो जाता है। So Ravan gets very embarrassed because Ram says after he gets rid of all of Ravana's weapons, just go back, you look a little tired today. राम जी के साथ युद्ध करते करते और सब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गया, राम जी उसको मौका देते, तुम जाओ थोड़ा सुस्ता लो और शांति से फिर आगे। So this is the worst thing. Ravan would rather be dead than have to be insulted like that by Ram. इतना भगवान श्री राम उसको लज्जित कर देता है, वो सोचता है हाँ जहर पी के मर जा, ठीक रहे। So he remembers all the curses that he has gotten throughout the years. One curse is by Anaranya, who is Ram's ancestor. तो उसी समय रावण याद करने लगा कि मेरे ऊपर कितने श्राप हैं, और एक श्राप अरण्य नाम का जो रघुवंश में आता है, एक राजा था। Vedavati's curse, Parvati's curse. वेदवती का एक श्राप था, पार्वती मैया का श्राप था। Nalakuvara's curse. नल कुबेर ने उसको श्राप दिया था। Nandi's curse. नंदी ने श्राप दिया था। So Ravana becomes desperate at this point. और उस समय एकदम व्याकुल हो जाता है रावण। He says, there's only one thing that can save me now. It's Kumbhakarna Bai. इतना व्याकुल हो गया, वो सोच जान गया मैं बचने वाला हूँ, लेकिन एक जन भी है, मेरा कुंभकर्ण भाई। Everyone loves Kumbhakarna. सभी लोग कुंभकर्ण को देख के हंसते हैं। So remember that Kumbhakarna, he's only allowed to wake up every 6 months. सभी लोग जानते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि कुंभकर्ण 6 महीना में एक बार जागते हैं। And it was predicted that when he was woken up at the wrong time, that was going to be when he died. और भविष्यवाणी किया गया था, गलत समय में, अनुचित समय में अगर उठेगा तो मर जाएगा। So Ravan sends people, his Rakshasas, into the cave to wake up Kumbhakarna. सभी जितने राक्षस को भेजा गया गंधर्व के भीतर, जगाओ जगाओ उसको। And they can't even enter the cave because he's breathing so hard.
गुरु महाराज जैसे भी सांस लिया वही रखा बताया गया रावण जब सांस छोड़ते थे उड़ जाते थे सैनिक लोग Kumbhakarna, not Ravan. कुंभकर्ण बताया गया है गंधर्व के भीतर जब सांस छोड़ते थे इतनी शक्ति से कि कोई भी सैनिक नगी जाके उड़ जाएगा And he snores when he sleeps. और वो बहुत नाक बजाता था So finally they think the only way to do this is to bring meat for him. और जगाने के लिए भयंकर रूप से मांस लाया गया So everyone's screaming, they're bringing meat, they got elephants jumping on his body, wake up, wake up. और सभी लोग यहाँ तक हाथी भी उसके पीठ के ऊपर धरा गया जागो जागो सब चिल्ला चिल्ला के जगा रहे And so the first thing he does is when he wakes up, he starts eating. Throwing everything in his mouth. जैसे वो जगह पहला चीज क्या करा भक्षण शुरू कर दे He said, why you woken me up at the wrong time? और पहला चीज उसने कहा कि मुझे गलत समय में क्यों जगाया गया And so basically then he drinks a lot of liquor. और बहुत से शराब जो है यमुना भी था वो भी पी So on the way he hears the whole story, and the demigods are really worried about this whole thing because Kumbhakarna cannot be defeated. सब देवता भी अचंभों में पड़ गए कि कुंभकर्ण को हराना इतना सरल नहीं है When he meets Ravan, he actually tells Ravan, send Sita back, this is causing so many problems, everyone's going to die. रावण ने पूरा इतिहास जब बताया कौन कौन मरते गए तो कुंभकर्ण कहने लगा सीता को वापस भेज दो सब ठीक हो जाएगा And then Ravan says, don't dwell on the past, you have your duty. If do you love me or are you going to give up the fight? और रावण ने क्या किया उसको भड़काया देखो तुम मुझे मदद करना चाहते हो कि नहीं So then everybody in the city begins to celebrate because Kumbhakarna is going to go out and fight with Ram. और जितने बचे हुए सिपाही थे सब हर्षित हो जाते क्योंकि कुंभकर्ण आ गया So Kumbhakarna goes out and everyone sees this gigantic form out there and he begins to even eat the monkeys and they come out from his ears. और क्या हुआ कुंभकर्ण इतने भयंकर था कि ऐसे हाथ से निचोड़कर बानर लोग की भक्षण कर जाते कुछ कुछ उसके कान से भी निकलते थे And the monkeys are running away and Hanuman's saying, don't run away. Angada's saying, don't run away. But they're just so scared of this gigantic. सब बानर भागने लगते हनुमान जी ने रोके कि मत भागो मत डरिए उससे And Kumbhakarna is just so upset with his fighting and he actually starts to eat rakshasas too. He can't tell the difference. कुंभकर्ण बताया गया है असमंजस में इतने पड़ गए कि राक्षस को भी खाने लगा वो फर्क नहीं देख रहे कौन बानर है कौन राक्षस Kumbhakarna finally hits Hanuman and Hanuman is knocked unconscious again. और कुंभकर्ण ने अपना मुस्तिक प्रहार करता है हनुमान जी पर हनुमान जी मूर्छित हो जाते हैं And Sugriva comes and he tries to attack Kumbhakarna and Kumbhakarna grabs him. और क्या हुआ उधर से सुग्रीव आ जाते हैं और आप सभी जानते गोरिल्ला की तरह और इधर क्या हुआ उसके पकड़ लेता है And everyone's upset because their king Sugriva has now been taken captive. और क्या हुआ उसको ऐसे अपने मुस्तिक में बांध लेते हैं So then then Sugriva wakes up after he's been captured by Kumbhakarna and bites off the nose and ears of Kumbhakarna. और जब वो जागृत होता है तो सुग्रीव ने क्या किया उसके नाक कान सब काटने लगता है अपने दांतों से And he just starts eating everybody there. और वहां पर जितने सबको खाने लगता है And not only the monkeys and even Rakshasas coming out of his ears, they're coming out of the nose too. और बताया कि उनके नाक कान सब से निकलने लगता है So Kumbhakarna then begins to fight with Lakshman, but Lakshman says, please fight with Ram. And Ram comes out and Kumbhakarna says, actually, no, before that, Vibhishan comes out and asks him to surrender. तो क्या होता है फिर भविष्य आता है भविष्य आकर अपने भाई को समझाता है कि समर्पण हो जाओ भैया And Kumbhakarna says, get out of my way because I'm so angry I can't tell the difference between friends and enemies. कुंभकर्ण कहने लगता है भैया हट जाओ
अभी हमारे ऊपर इतना क्रोध है कि हमें पता नहीं लगे कौन मेरा शत्रु है कौन मित्र है। Plus, you have to stay around because you have to continue the dynasty after everyone else dies. और वो बहुत सुंदर बात कहा कि भैया तुम तो रहोगे, तुम्हारे कारण से हमारा कुल चलेगा। So then Ram challenges Kumbhakarna and he fires his arrows at Kumbhakarna. भगवान श्री राम फिर कुंभकर्ण से लड़ते हैं, अपने बाण उनके ऊपर वार करते हैं। And with the wind god weapon, he cuts off one arm of Kumbhakarna. और बताया गया है जो वायु के द्वारा अस्त्र दिया गया, अस्त्र बाण मारकर उसका एक भुजाएं को उखाड़ देता है। And with the Indra weapon, he cuts off the other arm. और इंद्र के द्वारा जो बताया गया बाण दिया गया And दूसरी भुजाएं। cuts off Kumbhakarna's legs. और फिर बताएगा उनके जो पैर है वो भी काटा गया। And he fills Kumbhakarna's mouth with arrows. और भगवान श्री राम ने कुंभकर्ण के जो मुख है वो बाणों के बौछार से भर देता। And then with Indra's arrow again, he cuts off Kumbhakarna's head. और फिर इंद्र जी के बाण से उनका गला भी काट देता। The head falls and it blocks the whole entrance to Lanka. It's so big. उसके सर गिरा, पूरा बताया गया लंका के द्वारे बंद हुई। And his body falls in the sea. और उनका जो बताया गया धड़ है, धड़ जाकर सागर में गिरता। And so one interesting thing about this battle between Ravan and Ram is that Ravan arranged that all of his dead soldiers were thrown into the ocean. और क्या होता है वो युद्ध के दौरान से सभी बताया गया सिपाही मारे गए, उनको सागर में फेंका जाए। But all the dead soldiers on Ram's side, the monkeys, their bodies were preserved. So later on, when Hanuman brought back the Sanjeevani from the mountain, they all came back to life. तो आप देख सकते हैं रावण के जितने सैनिक को सबको फेंका गया सागर में, नहीं कि भगवान श्री राम के जितने सैनिक हैं हनुमान जी जब सजीवन लाते हैं सबको जीवन दान मिल जाता है। So all the monkeys at the end of the battle were still alive. सब जितने बानर भगवान श्री राम के युद्ध में थे सब जीवित थे। So then one after the other, the sons of Ravana get killed. एक प्रति एक जितने रावण जी के संतान हैं सब मरते गए। Trishira, Devantaka, Nirantaka, Mahodara, Atikaya, Maharspasha. Do you remember? जितने गुरु महाराज सब मारा गया धीरे धीरे। Then Karantaka, Trishiras. Oh my God, so many Rakshasas got killed. बहुत बहुत से राक्षस सब मारा गए, एक प्रति एक मरते गए। And all right, so anyway, we won't tell the story about Hanuman bringing back the mountain. We're not going to tell that story because everybody knows that story. Then Marakach is killed, Nikumba is killed. Let's see who else. This is a long story, long fight. हनुमान जी धौलागिरी पर्वत लाते हैं, आप सब जानते हैं, गुरु महाराज बोला नहीं बताएंगे आपको। So then Indrajit decides after Lakshman is brought back to life, Indrajit decides to actually perform this sacrifice to his local deity, because it was predicted if he does this sacrifice, he will get this invincible chariot and he will be victorious in battle. जब लक्ष्मण जी मूर्छित से जाग गए संजीवन विभूति लेकर, तो फिर मेघनाथ जो हैं इंद्रजीत वो जाकर अपने जो पूज्य आराध्य भगवान है उसको पूजन करता है, क्योंकि उस देवी के द्वारा अगर शक्ति मिल जाए तो उसको फिर कोई हराने वाला नहीं। So then what happens is that Vibhishan knows the secret place where the sacrifice is going on. लेकिन ये सब बात विभीषण जानता है कि कौन जगह ये पूजा हो रहा है। And so he leads Hanuman and Lakshman and many of the monkeys to this place, and Hanuman destroys the sacrifice by passing urine on the sacrifice. और क्या होता है यहाँ पर विभीषण हनुमान जी को लेकर वहाँ पर पहुँचता है, लक्ष्मण जी को लेकर हनुमान जी उस यज्ञ में शुशु कर देता है। So finally, we have Indrajit comes out and he's completely upset and he challenges Lakshman, and Lakshman actually kills him, saying that if I am actually the loyal brother of Ram, let this arrow kill this demon. और क्या होता है वहाँ पर घमासान युद्ध होता है,
लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी का, और उस बाण से कहता है मैं भगवान श्री राम का निष्ठा से अगर मैंने सेवा किया तो ये बाण जाकर मेघनाथ को चीर देगा। And so Ram says that we should send back Indrajit's body with great honor, because he's our enemy in life, but not after life. He's one of us. तो बोलने का प्रयास हो जाता है, उनका सर जाकर लंका में गिरता है, धड़ यहीं रह गया। अब भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि इज्जत के साथ में इसका धड़ को लंका में भेजा जाए। Anyway, so then Ravan becomes so angry that fire comes from his head, and everyone's afraid. और रावण इतने क्रोधित होता है, अब उसके सर से आग ही निकल रही। And Ravan finally comes out for the last battle. और आखिरी युद्ध के लिए रावण निकल गया। And he starts attacking everyone with a Brahmastra. अपने ब्रह्मास्त्र सबको वार करने लगता। And Ram just pulls his bow without even an arrow and goes twang, and all the Rakshasas fall down dead. और भगवान श्री राम ने क्या किया, बिना उसमें तीर लगाए सिर्फ अपने बताया गया है बाण को खाली खींचे और उसके जो वायु के शक्ति से सब जितने बचे सब मर गए। And Ram keeps firing arrows at Ravan, but at this point he's not able to kill him. अत्यंत भगवान श्री राम एक के बाद एक वार कर रहा है बाण रावण को मारने के लिए, लेकिन रावण मर नहीं रहा। And Ravan even hurls a javelin, that's a spear, at Vibhishan, but Lakshman actually stops it and cuts it down, but Lakshman is hit with this javelin. तो क्या हुआ, जिसको मोतों के समान कहते हैं, ऐसा बाण जब तीर मारते हैं तो लक्ष्मण जी के छाती पे लगता है, तोड़ देता लेकिन उसकी छाती में लग जाता है। And Shushena is called back to cure Lakshman with the Sanjeevani, and he cures Lakshman. तो सुषेण जी को फिर से लाया गया, उसको सजीवन देकर जीवित करने के लिए, मूर्छित से निकालने के लिए। And Ravan cuts down at one point Ram's flag on top of his chariot. और एक बार क्या किया, रावण भगवान श्री राम जी का जो झंडा है उसको तोड़ देता है। And finally, Ravan is knocked unconscious, and his driver takes him away from the battlefield. और एक दौरान में रावण भी घायल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है कि उसके जो सारथी उसको लेकर भाग जाता है। And Ravan chastises his driver. How can you take me away from the battlefield? रावण अपने सारथी को बहुत डांटता है कि मुझे कैसे युद्ध से भगा कर लाए तुम। And the driver explains, I just saved your life. सारथी बोले ठीक है, तुम्हारी जान बचा लिया। So, but at this point, Ram is just very tired from the whole fight. और गुरु महाराज कह रहे हैं कि भगवान श्री राम बहुत ही थक जाते इस युद्ध से। And so, Agastya Muni appears and teaches them the Aditya Hridaya mantra. और अगस्त जी वहाँ पर पहुँचते हैं, भगवान को एक दिन मंत्र देते हैं। And Ram does the Achman, chants the mantra, and he begins to attack Ravan for the final battle. और भगवान आचमन के बाद में मंत्र का जाप करते हैं और अंतिम लड़ाई अब कर रहे हैं। And remember that Ram is also on Indra's chariot, and Matali, Indra's chariot driver, is driving. भगवान श्री राम जो इंद्र के रथ है उस पर है, और बताया गया उसके जो सारथी है वो उस पर है। And then Ram becomes very angry, and he starts using his arrows to cut the heads off of Ravan. और भगवान श्री राम ने अपने बाणों से रावण के सर काटने लगे। And so 100 times he cuts the heads off, and they keep growing back each time. जैसे एक सर कटता है पुनः आ जाता है, जैसे फिर कटता है फिर आ जाता है। So the battle continues day and night, and they're just fighting each other, and Ram's cutting off the heads, and they're growing back, and he's cutting off the heads, and they're growing back again. And he's thinking, what am I going to do? रात दिन लड़ाई होता है, और बाण से भगवान श्री राम सर काटता है, फिर सर आता है, फिर काटता है। भगवान जी सोचने लगा मैं क्या करूं? And Matali finally says, use Brahma's missile and fire it at Ravana's heart. और तब उसमें भगवान के जो सारथी बताने लगता है कि आप ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर उसकी छाती में, हृदय में वार कीजिए। And I know this story is a little different than the one you're accustomed to, but this is from the Valmiki Ramayan. आप सभी लोग जानते हैं तुलसीकृत रामायण में आपको मिला गया कि नाभि में उसके अमृत था, लेकिन यहाँ वाल्मीकि रामायण में गुरु महाराज कह रहे हैं कि उसकी छाती पे वार किया गया और उसके सारथी ने बताया, Which is the original Ramayan. जो एकदम
महत्वपूर्ण रामायण जो है वाल्मीकि रामायण उसमें ये So then our friend Ravan dies. और क्या हुआ आप लोग का जो मित्र है मर जाएगा And then all the monkeys and bears are just going, Jai! सभी वानर सेना तादाद में आकर जय जयकार भगवान श्री राम के करने लगे And Ram instructs Vibhishan to do the last rites, the funeral ceremony for और Ram. भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम में भविष्य से कहने लगा अपना भाई की अंत्येष्टि क्रिया करो And that's the end of the story today. और आज गुरु महाराज यहीं पर कथा समाप्त करें Of course, we know, I mean, just to make a long story short, that Ram, after some time, asks to see Sita Devi, and she's brought back on a palanquin. Eventually, she walks a little distance to see Ram, and he tells Lakshman that I'm not interested in her, let her go somewhere else. तो और से कथा है गुरु महाराज कह रहे फिर उनको डोली पे बैठा के लाते हैं सीता मैया फिर चल के आते हैं फिर मिलन होते हैं फिर राम भगवान कहते हैं कि मैं अब उन पर बहुत आसक्ति नहीं करता वो कहीं जा सकती है And everyone is shocked. And then he says to Lakshman, build a fire and have Sita enter into it. सभी अचंभों में पड़ जाते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण तुम अग्नि को तैयार करो And so the fire is built, Maya Sita enters, and the real Sita comes out. और जब अग्नि बताया गया वहाँ पर लगाया गया तो उस द्वार अंत में जो माया सीता अंदर जाती है असली सीता वापस आ जाती All right, है that's all we have time for today. So, Shri Ram ki jai, Hanuman ki jai, Sita Devi ki jai. Okay, any questions before we? किसी के पास कोई प्रश्न है